Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Title पढ़ लिया होगा वीडियो का, तो definitely this video is a quick and a short review of this Lightning to 3.5 mm jack. And for those who are thinking it's original, so no, it is not the original product. I would say it is the first copy. It is a first copy which is I would say they have copied it very smartly. सबसे अच्छी बात इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब इसकी जो अनबॉक्सिंग है, इसका मैंने शॉर्ट्स डाल दिया है मेरे चैनल के ऊपर. यू कैन डेफिनेटली चेक दैट शॉर्ट. आई सिंपली स्पीक अबाउट के वेदर यू शुड बाय दिस फर्स्ट कॉपी और नॉट. ये वर्थ है या नहीं है, या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितने दिन बाद ये काम करना बंद कर देगा. सो मैंने इसको ऑर्डर किया था ऑलमोस्ट अ वीक अगो. एक हफ्ते पहले ये मेरे पास आ गया था. ये जो टूट गया, ये सॉरी, इसकी जो पैकेजिंग थी ये बहुत रिजिड थी क्योंकि I don't know what kind of glue they used, but it is very strong kind of a packaging. I think इतना अच्छा पैकेज तो खुद एप्पल वाले भी नहीं करते होंगे. But kudos whoever like made this. The thing is, while I was मैंने जो इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर सेपरेटली, लाइटनिंग टू 3.5 mm जैक के ऊपर. सो मैंने उस वक्त जो है जेब्रॉनिक्स का मंगवाया था, बट वो जेब्रॉनिक्स के अडेप्टर के अंदर इशू ये हो रहा था कि इट वाज नॉट वर्किंग विद द माइक्रोफोन और विद द हेडफोन्स. इट वाज वेरी लूज कनेक्शन. आई डोंट नो, इट वाजंट कंपैटिबल एट ऑल टू यूज़. बट दिस वन, आई वुड से कि दिस turned out to be one of the best choice I made. This is, I would say, I played a gamble, and in that gamble I won. Because what was the scenario while I was looking on Flipkart, because क्या हो रहा था, एंड्रॉयड से तो मैं शूट कर ले रहा था, एंड्रॉयड से ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जा रही थी इस माइक्रोफोन में, बट जो क्वालिटी आईफोन के कैमरा के अंदर आती है, नॉट gonna compare both of them. They both are nice in their own way, I would say, but जो इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आईफोन के अंदर शूट हो जाती है, दैट इज़ somehow missing in Android, and that's true. So मैं अडेप्टर ढूंढ रहा था कि शायद कोई अडेप्टर मिल जाए. मेरा मेजर पर्पस इस आईफोन से सॉन्ग वगैरह सुनना नहीं है बिकॉज ऑफ द ग्रेट बैटरी लाइफ. मेरा सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पर्पस था वीडियो रिकॉर्डिंग का विद दिस डिवाइस, विच थैंकफुली टू दिस इज गॉट एग्जीक्यूटेड. ये अडेप्टर मैंने कनेक्ट किया एंड समहाउ इट कनेक्टेड. लेट मी टेल यू द बेस्ट पार्ट कि इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. इट वॉज डायरेक्टली कनेक्टिंग मैकेनिकली, आई वुड से. नॉर्मली जो अडेप्टर होते हैं उसका आपको पहले ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ता है फ़ोन के साथ में इन ऑर्डर टू यूज़ इट. बट यहाँ पर सिनेरियो वॉज टोटली डिफरेंट. यहाँ पर कोई अडेप्टर के वो आपको ब्लूटूथ ऑन नहीं करना, आपको ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करना. यू जस्ट प्लग इट, कनेक्ट योर 3.5 mm जैक एंड एन्जॉय. So currently I'm using that same adapter. I'll show that further in this video, but let me talk about the quality of this product. While I unboxed it, I would say that मैंने expect नहीं किया था कि कोई कॉपी इतनी अच्छी भी कर सकता है एप्पल की. Also I knew that there are so many brands and other companies who copy exact products of Apple, but somehow they leave tiny details away, but this one did not forget to do that. So ये मैंने ऑर्डर करना सबसे बेस्ट इसलिए रहा. एंड मैं गैम्बल की जहाँ तक बात कर रहा था, गैम्बल इस तरीके से हुआ कि इट्स लिस्टेड ऑन फ्लिपकार्ट अराउंड 800 रुपीज़. 800 रुपीज़ में लिस्टेड है एंड इसके साथ में नो रिटर्न पॉलिसी है. So in case your adapter does not work, you cannot return it to Flipkart. You have to keep that to remind yourself that you have wasted your almost 800 rupees. So I am thankful that my money
wasn't wasted at all. I have seen the reviews in the Flipkart application. There were so many people who were saying the same thing. Very few were there जिनके adapter नहीं काम किए या जिनके adapter में कोई issue था. मेरे adapter के अंदर कोई issue नहीं था. It was working perfectly fine. Right now ये audio जो आप सुन रहे हो, it directly coming through this mic and not the microphone of the mobile. So this adapter was definitely a charm for me. And मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा monologue type हो गया, but no, this was just a review to let you people know that whether you should buy this lightning to headphone jack of this particular seller or not. But I'd recommend those who are using iPhone and they want this adapter in a very good price range, they can go ahead for this. The product is very nice, very compatible, and let me just show you the adapter how it is working fine. Just yes, so this is how it is connected. You can't even spot a difference whether it is a original one or copy. So this was it, short, simple, quick review of this product. If you like this, you can find the product link in the comment, नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के ऊपर आपको इसका लिंक. एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी क्रिटिसिज्म or anything you would like to leave a comment. And thank you all very much for watching this video, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care and खुदा हाफिज़ guys, bye bye.